हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट गुरु। इस वर्चुअल असिस्टेंट सीरीज की फर्स्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट फंक्शंस पर काम किया था। देन इन्हीं दो मॉड्यूल्स का यूज करके हमने रेगुलर कन्वर्सेशंस पर वर्क किया था। उसके बाद ओएस मॉड्यूल का यूज करके हमने किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को ओपन करने के बारे में सीखा था। एंड इन द सेकंड वीडियो ओएस एंड रैंडम मॉड्यूल का यूज करके म्यूजिक प्ले करना, विकिपीडिया मॉड्यूल की हेल्प से कुछ भी विकिपीडिया पर सर्च करना एंड वेब ब्राउजर मॉड्यूल की हेल्प से किसी भी वेबसाइट को ओपन करने पर फोकस किया था। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड दोज वीडियोस येट, आई विल रिकमेंड टू वॉच दोज वीडियोस एंड देन रिटर्न टू दिस वीडियो। आज की इस तीसरी वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेब ब्राउजर मॉड्यूल के थ्रू गूगल मैप्स को एक्सेस करना एंड देन उसकी हेल्प से किसी भी लोकेशन को सर्च करने के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस का यूज करके किसी भी नोट को रीड या राइट करना। इसके बाद हम देखेंगे पाईजोक्स मॉड्यूल की हेल्प से जोक्स को क्रैक करना एंड एट लास्ट बट नॉट एट लीस्ट टाइम मॉड्यूल की हेल्प से करंट टाइम को फेच आउट करना। नाउ लेट्स सी इट्स फंक्शनैलिटी। Good evening, sir. I am your virtual assistant, Emma. What should I call you, sir? अक्षय। Welcome, Mr. Akshay. How can I help you, sir? टेल मी अ जोक। How many programmers does it take to change a light bulb? None. That's a hardware problem. राइट अ नोट। What should I write, sir? Hi, I am Akshay. Sir, should I include date and time as well? No. Done, sir. Show notes. Showing notes. Where is Dehradun? Locating. Dear done. These are the functions that we will work with. So without wasting any time, let us start building this project. Now guys, for location, let us write elif. Where is in order. Order equals to order dot replace where is with none. Now let us take a variable named location and let us store our order in it. Now speak locating and speak location. Now let's write web browser dot open. Now let us write the link here, which is https://www.google.co.in/maps/place/plus location. Now guys, what we are doing here is जब भी यूजर वेयर इज की कमांड देगा तो हम लोग वेयर इज को रिप्लेस कर देंगे नन के साथ, बिकॉज वी जस्ट डोंट वांट कि वेयर इज हमारे आउटपुट में भी आए। सपोज आई एम सर्चिंग वेयर इज देहरादून, आई जस्ट वांट कि मैप्स पर वो बस देहरादून सर्च करे, ना कि वेयर इज देहरादून सर्च करे। नाउ वी आर स्टोरिंग इट इन अ वेरिएबल नेम लोकेशन। उसके बाद स्पीक फंक्शन की हेल्प से वी विल स्पीक लोकेटिंग एंड द लोकेशन विच इज ऑलरेडी गिवन बाय यूजर। देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक, इसको कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे बिकॉज कोट्स के अंदर लिखने से वो स्ट्रिंग बन जाएगा। Now we'll test it later, but for now let us work on reading and writing a note, and for that let us write elif write a note in order. Speak. What should I write, sir? Now let us store the user command in a variable named note. Now let us open a file named jarvis.txt, that is text file, in write mode. Now let us store it in a variable named file. Now guys, if you aren't aware about file handling, तो मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ। ये ऑलरेडी जिस डायरेक्टरी में हमने प्रोग्राम को सेव किया है उसी डायरेक्टरी में सर्च करेगा फॉर अ फाइल नेम jarvis.txt। अगर वहां पर ऑलरेडी इस नाम से कोई फाइल एग्जिस्टेड है तो ये उसको ओपन करेगा, एंड इन केस अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल विद द नेम jarvis.txt। नाउ लेट अस स्पीक, सर should I include date and time as well? Now let us store users command in a variable named sn, and let's write if yes in sn or sure in sn or yeah in sn
Then we have to include date time as well. And for that, we have to write datetime.now.strft time in the format hours, minutes, and seconds. And let's store it in a variable named strtime. Now we'll write strtime in our file and we will write the note. Now this note is the one जो user हमें commands देगा. Else we'll write only note. Now guys, इस function की अगर बात करें तो if user say write a note, then our assistant will speak what should I write sir. Now whatever the user will say, we'll store it in a variable named note, and after that we'll create a file named jarvis.txt and we'll open it in write mode. Now our assistant will speak, sir, should I include date and time as well? And whatever the user will say, we'll store it in a variable named sn through this take command function. Now, if user say yes, sure or yeah, then we will write the current time which we have stored in this str time variable, and then we will write note, which is the command which we will get from user. And if user doesn't want us to include time, then we'll simply write the note. Now to read our notes, we will write elif show note in order. Speak showing notes. We'll take a variable name file and we will open our already existed jarvis.txt file in read mode. Now we will print file.read and we will speak first 6 lines of it as well. Now we will check its functionality later on as well. For now, let us work on jokes, and for that we need to import one more module named pyjokes. Let us write pip install pyjokes. Now ये भी थोड़ा टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा. Successfully installed. Now let's go back down and here we will write elif jokes in order speak pyjokes dot get underscore joke language equals to English and category equals to neutral. That's it with jokes. Now let us see how to fetch the current time, and for that let's write elif the time in order. And if you remember, तो current time को हमने पहले भी fetch किया था when we made our write a note function. अगर मैं थोड़ा ऊपर करूँ तो this is the command जिसे हमने current time को fetch किया था. So let's just copy it and let's just paste it here. After this we will speak, well, the time is str time. Now let's just run it. It is showing an error. Unsolved reference to read. Okay, this is file.read. Now let's just run it. Good evening, sir. I am your virtual assistant, Emma. What should I call you, sir? Akshay. Welcome, Mr. Akshay. How can I help you, sir? Write a note. What should I write, sir? This is a testing program. Sir, should I include date and time as well? Yeah. Show note. Showing notes. Crack a joke. We did a small mistake there. What is the time? Well, the time is 18 hours 54 minutes and 40 seconds. Crack jokes. How come there is no obfuscated pearl contest? Because everyone would win. Let's just stop it और यहाँ पर थोड़े से changes करते हैं. Instead of jokes, let it be joke. And यहाँ पर let us also speak done sir. Similarly here, let us also speak done sir. Now let's just run it again.
Good evening, sir. I am your virtual assistant, Emma. What should I call you, sir? Akshay. Welcome, Mr. Akshay. How can I help you, sir? Write a note. What should I write, sir? Hi, I am Akshay. Sir, should I include date and time as well? No. Done, sir. Show note. Showing notes. Where is Pathankot? Locating. Where is Pathankot? Unable to recognize your voice. We made a small mistake here. The mistake is यहाँ पर हमने W बड़ा लिख दिया है. So let us replace it with small w. And now let's just run it again. Good evening, sir. I am your virtual assistant, Emma. What should I call you, sir? Akshay. Welcome, Mr. Akshay. How can I help you, sir? Where is Pathankot? Locating. Pathankot. So that's it from this video, guys. I hope you liked the video, and if you do, kindly give it a thumbs up, share it with your friends, and forgot not to subscribe the channel. I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.